everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up MCQ number 51 to 60. In case you are new here, we have covered a lot of MCQs and case scenarios of law and audit each. So in case you have not seen those videos, please check the description box below. I have given the link of these videos in the description box and some other videos link is also present. So go ahead and check them out. Okay, so let's start with the first MCQ for today, which is MCQ number 51. BCO Private Limited is operating in India for the last 15 years. It has 3 group companies, 1 subsidiary in India and the other 2 in Ireland and France. All these subsidiaries were acquired one by one and investments were made in these companies gradually. That is, initially control was not obtained and after investment for some period control was obtained. तो इसको हम FR के अंदर पढ़ते हैं step by step acquisition, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. The statutory auditors have evaluated that all the group companies are significant for the purpose of audit of consolidated financial statements. So सारी की सारी जो भी companies हैं, subsidiaries हैं, they are significant for the purpose of consolidation. Okay. During the year ended 31st March 2019, the audited financial statements of all the components are available except for French company whose audit got delayed and would not get completed before the release date of CFS of the parent company. Now this is an issue. यहाँ पर बताया था कि सारी की सारी कंपनी सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि जो कंसोलिडेशन हो रहा है उससे पहले एक पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल्स आ नहीं पाएंगी क्योंकि उसका ऑडिट कंप्लीट नहीं हो पाएगा जब तक पेरेंट कंपनी का ऑडिट कंप्लीट होगा, जिसकी वजह से देयर इज एन इशू दैट वी विल नॉट बी एबल टू कंसोलिडेट द डेटा ऑफ फ्रेंच कंपनी. For this purpose of consolidation, the parent company has provided the audited financial statements for other components. Please suggest what can be the possible situation in respect of the financial statements of French company for the purpose of consolidation for the purpose of audit of CFS. तो आप बताओ, सारी की सारी आपकी जो कंपनीज हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी का हमारे पास फाइनेंशियल्स ऑडिटेड फाइनेंशियल्स नहीं आए हैं, तो इस केस में आपके हिसाब से क्या होगा? इस केस में मेरे हिसाब से तो जब कंसोलिडेशन के लिए सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं तो डेफिनेटली अगर हमारे पास रिपोर्ट नहीं आ रही है, हमारे पास ऑडिटेड फाइनेंशियल्स नहीं आ रहे हैं किसी भी एक कॉम्पोनेंट के, तो हमें अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देना चाहिए. वाई? बिकॉज कंसोलिडेशन वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड टू बी डन. So in this case, we should modify our report. Let's see which option is the best in this case. First option is, since the audit of French company is in progress, since the audit of French company is in progress, its financial statements subject to audit can be considered by the auditor of parent company and audited signed financials can be given to the auditors even after the release of audited consolidated financial statement, as this is the matter of documentation only. क्या आपके हिसाब से सही लिखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं. क्या सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए हमें ऑडिटेड फाइनेंशियल्स चाहिए होते हैं? नो. नेक्स्ट, the management should give the management accounts to the auditors of CFS and the auditor can mention the same point in other matter paragraph. बिल्कुल भी नहीं. क्या other matter para हमारा substitute होता है for the modification of audit report? No, never. So this is very very wrong. Next is, auditor should get the financial statements of the French company excluded from the CFS. Excluded क्यों भाई? होनी तो चाहिए थी. इस केस में तो obvious ही बात है, जब audited financials नहीं आई तो there is a problem, तो हम rely नहीं कर सकते. तो इसको एक्सक्लूड करवाने से क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे होंगे पूरी ग्रुप कंपनीज का? नहीं दे रहे होंगे. सो दिस इज ऑल्सो नॉट दी सोल्यूशन. नाउ, if the auditor does not receive the audited financial statements of the French company, he should modify his report. This is the appropriate option. तो आपको समझ आया ये 3 ऑप्शंस गलत क्यों थे? क्योंकि इसमें बेकार बातें लिख रखी थी. सिंपली अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस वजह से कौन सा पॉइंट गलत हो रहा है. फर्स्ट पॉइंट के अंदर कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए ही आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल्स चाहिए होते हैं कॉम्पोनेंट्स के, तो ये तो बिल्कुल गलत था. सेकंड पॉइंट लिख रखा था कि आप अदर मैटर पैरा में इस बात को लिख दो तो इस तरीके से आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को इशू कर सकते हो. नो, दिस इज नॉट राइट. अदर मैटर पैरा इज नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफिकेशन. तो डेफिनेटली दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. थर्ड ऑप्शन वाज कि आप फ्रेंच कंपनी का डेटा ही हटवा
दो फाइनेंशियल्स में से, तो क्या तब भी आपके ग्रुप फाइनेंशियल्स की जो पोजीशन होगी वो ट्रू एंड फेयर होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्रेंच कंपनी का डेटा भी आना चाहिए था। सो दैट इज व्हाई द थर्ड ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट. Now comes the fourth option, which is appropriate, that the auditor should modify his report. Okay, let's move on to the next case question. KB Limited is a public company. Okay, is engaged in the business of construction. It has multiple subsidiaries and associates in India. The company acquired PP GmbH in Germany on 1st of February 2019. The company also obtained control in PP GmbH on the same date. So we have KB Limited, KB के नीचे we have BB GmbH. ठीक है? Now its investment in PP GmbH was of a huge amount. The company has been preparing its CFS over the last few years, and this has also become a matter of concern for the company for the year ended 31st March 2019. जिस year में उसने acquire किया था उस financial year ended पर. Now the management is of the view that the consolidation of BB GmbH would not be required in CFS for the year ended 31st March 2019 because this is the first year of acquisition. However, the auditors have not been agreeing for the same. Now, the timeline for submission of audited financial statements is due in few months' time. In the meantime, the management moved the consolidation of PPP GmbH, taking audited financial statements of PPP GmbH which are available in the gap of its local country. तो यहाँ तो उन्होंने ठीक कर दिया कि उनको फाइनेंशियल्स चाहिए, वहाँ पर उन्होंने ऑडिटर की बात मान ली कि ऐसा नहीं है, फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन है तो यू डू नॉट रिक्वायर टू कंसोलिडेट. नो, दिस इज नॉट राइट. ठीक है, जैसे ही कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाता है उसी ईयर के अंदर कंसोलिडेशन हैज टू बी डन. नाउ उनकी लोकल कंट्री के गैप के हिसाब से फाइनेंशियल्स प्रिपेयर थे एंड द गैप कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स फ्रॉम लोकल गैप टू इंडियन गैप हैव बीन मेड बाय द पेरेंट कंपनी. तो यहाँ पर आपके जो कंसोलिडेशन होना है उससे पहले इन्होंने बताया है कि जो गैप है GAAP दैट वाज ऑफ द लोकल कंट्री एंड कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स भी करी गई हैं फ्रॉम लोकल टू इंडियन लाने के लिए. नाउ द गैप कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स आर सिग्निफिकेंट एट CFS लेवल. In the meantime, the management has also been consulting whether the consolidation would be required or not, also considering the fact that comparative figures in case of PPP GmbH would not be available. Further, the auditors have also raised observations regarding the gap conversion adjustments over which the management has a disagreement. As per the management, auditors are not required to comment on the gap adjustments because audited financial statements of PPP GmbH have been given to the auditors. Please help to resolve these matters. So एक बात बताओ, अगर आपने gap conversion के बाद अपनी रिपोर्ट दे दी, अपनी फाइनेंशियल्स दे दी हैं, अगर आपने कोई भी गैप एडजस्टमेंट्स आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल्स आए हैं, ठीक है, अब इस ऑफ अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपोनेंट, उसके वजह से आपकी CFS में कुछ कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, ऑब्वियस है होंगी क्योंकि वो अपनी लोकल कंट्री के हिसाब से बन रहे थे, लोकल कंट्री के गैप के हिसाब से बन रहे थे. नाउ यू हैव टू कन्वर्टेड इनटू द इंडियन गैप, तो डेफिनेटली देयर आर गोइंग टू बी एडजस्टमेंट्स. तो क्या इन एडजस्टमेंट्स को ऑडिटर को चेक करने की जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल होगी. क्यों? क्योंकि वो स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो नहीं आ रहे होंगे, सेपरेट में नहीं आ रहे थे लेकिन कंसोलिडेटेड में तो आ रहे हैं ना. तो कंसोलिडेटेड के टाइम it will become a part of auditors concern कि whether these adjustments are correct or not. So definitely the parent company auditor is going to check these adjustments. Also the consolidation is definitely required. The management is totally incorrect here कि first year है तो हमें consolidate करने की ज़रूरत नहीं है. No, they are not right in this. So दोनों ही केस में management बिल्कुल भी सही नहीं बोल रही. Gap conversion adjustment को भी check करना auditor की responsibility बनती है and he has the full right to comment upon them, and also the consolidation has to be done. ठीक है, तो let's see what question they have raised. Please help to resolve these matters. So first option is consolidation of PPP GmbH should be done, but gap conversion adjustments are not required to be audited. Incorrect. Consolidation of PPP GmbH should not be done. करना पड़ेगा भाई, गलत option. Consolidation of PPP GmbH should be done and gap conversion adjustments are also required to be audited. बिल्कुल ठीक. Consolidation of PPP GmbH is a choice of management. No, it is not a choice. It has to be done in the year जिसमें acquisition of control acquire किया है. ठीक है, तो the correct option in this case would be C. Both of these are required. Let's move on to the next question. BDN Limited is a medium-sized company engaged in the business of retail.
It has two subsidiaries and one joint venture. Both the subsidiaries are larger in size as compared to the parent company. The accounting policies of the parent company, its subsidiaries, joint venture were same. Accounting policy same है. However, during the year ended 31st March 2019, one of its subsidiaries, SMA Private Limited, changed the method of depreciation of property, plant and equipment to WDV method, which is different from the method followed by the parent company, that is SLM. तो इस केस में बताओ क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है या अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज है? दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. क्या अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज मानकर इसको कंसिडर करना चाहिए? नो, दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, विच इज नॉर्मल. कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. Further, the subsidiary also changed the method of valuation. Now, this is an accounting policy. अब accounting policy में change आया तो definitely you'll have to consider this. आपको इसको convert करके parent के हिसाब से बनाना पड़ेगा, parent की valuation policy के हिसाब से आपको convert करना पड़ेगा and then consolidation will happen. लेकिन depreciation तो subsidiary किसी भी तरह से charge कर सकती है because it is an accounting estimate. ठीक है. Now, इसमें था कि उन्होंने सब्सिडरी ने क्या किया, दे हैव चेंज्ड द मेथड ऑफ वैल्यूएशन फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज मेथड व्हिच हैज बिकम डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट एज द पेरेंट फॉलोज फीफो. तो यहाँ पर वैल्यूएशन किस पर होना चाहिए था? फीफो पर ही होना चाहिए था. नाउ दीज चेंजेस अब सेपरेट फाइनेंशियल्स बनाते हुए वो आराम से वेटेड एवरेज में कर सकते हैं वैल्यूएशन, देयर इज नो इशू. बट व्हाइल कंसोलिडेटिंग द फाइनेंशियल्स उस टाइम पर हमें फीफो पर वापस लाना पड़ेगा. नाउ these changes were made by the subsidiary because it reflected the better picture of its standalone financial statements. Now, for the purpose of CFS, the auditors have asked the management of parent company to ensure that accounting policies of the group companies should align with that of the parent in line with the requirements of accounting standard. But the management of parent and subsidiary company believe that out of the three group companies other than parent, only one group company requires its change for the purpose of consolidation and the same should be ignored by the auditors. Please suggest. Management का view बिल्कुल भी correct नहीं है. For CFS, method of depreciation of SMA Private Limited may continue to be different. बिल्कुल सही लिखा है. However, the method of valuation of inventory should be aligned with that of parent. बिल्कुल ठीक point बोल रखे हैं दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक point किस लिए? क्योंकि depreciation में कोई change करने की जरूरत नहीं है because it is not an accounting policy. But हाँ, valuation में there is a requirement कि आपको parent के हिसाब से बनाना पड़ेगा. So correct option would be B in this case. फिर भी हम third और fourth देख लेते हैं. For CFS, method of valuation of inventory of SMA Private Limited may continue to be different. However, method of depreciation should be aligned. No, this is totally incorrect. Opposite लिख रखा है. The auditor should get these changes made in the standalone. No, standalone में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ consolidation के purpose के लिए हमें adjustments करनी पड़ेंगी. Correct till here. Let's move on to the next question. I hope you are participating with me and marking all the questions which you are attempting incorrectly for the first time, so that once you are done with all these MCQs and you want to revise these MCQs, you just go through those which you have attempted incorrectly. So that is why please keep on marking the MCQs as I have already told you in the earlier videos. Keep on marking, keep on practicing, keep on participating. Okay, let's move on to the next question. AJ Private Limited is engaged in the business of retail having annual turnover of 1800 crores. The company has a plan to get listed on Bombay Stock Exchange next year. The company has 3 associates, 4 subsidiaries and 1 joint venture. The company prepares its consolidated financial statements on a quarterly basis for the purpose of internal purpose. Now, the quarterly financials are reviewed by the statutory auditors of the company. The group companies of the parent company have increased in terms of size, looking at the total assets and the revenue of the group. For the purpose of audit of consolidated financial statements for the year ended 31st March 2020, management has requested the statutory auditors that it would be able to provide management certified accounts of the joint venture as its audit would not get completed on time, and even without joint venture, the auditors would be able to cover 75% of the total assets of the group at consolidated level. However, the statutory auditors insisted that they need to cover at least 80% of the total assets of the group at consolidated level as per the requirements of auditing standards, and for that financials of the joint venture should be audited. Please advise. तो पहली बात तो जो ये auditors ने line बोली है कि let me mark it कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनको एटलीस्ट 80% ऑफ द टोटल एसेट्स को चेक करना पड़ेगा. तो बिलीव मी, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा कि ऐसा कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है, बट
टू माई सरप्राइज आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड दिस आउट कि ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड में लिखा है, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करी है पहले भी और अभी भी, काफ़ी सोचा, काफ़ी कंसिडर किया, काफ़ी सर्च किया, बट आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड दिस लाइन कि कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ऐसा मेंशन है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को एटलीस्ट 80% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द ग्रुप को चेक करने की ज़रूरत है, कवर करने की ज़रूरत है. नो, आई डिड नॉट फाइंड दिस इन एनी ऑफ द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. इन केस यू नो इट, प्लीज़ लेट मी ऑल्सो नो, बिकॉज मुझे कहीं नहीं मिला. एंड अगर आपको पता है तो प्लीज़ शेयर इट विद मी, इससे मेरी भी नॉलेज अपडेट होगी, मुझे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी. ठीक है, बट एज पर मी मुझे कोई भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ऐसी चीज़ नहीं मिली है, जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन. ओके, नाउ इधर हम देखें तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन. अच्छा, क्वेश्चन इज ओवर, नाउ वी हैव टू जस्ट एडवाइस. सबसे पहले इसको कंसिडर करते हैं, इसको समझते हैं. ये वाला क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में था जो May 21 से पहले, May 20 का स्टडी मटेरियल आया था ना, उसके अंदर दिस क्वेश्चन वाज देयर इन द MCQ पार्ट. नाउ इसमें क्या है मैं आपको एक बार क्लियर करती हूँ. इसमें कंपनी है, कंपनी की 3 एसोसिएट्स हैं, 4 सब्सिडरी हैं, एक जॉइंट वेंचर है. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने वाली हैं और कंसोलिडेटेड बनाते टाइम जॉइंट वेंचर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड वाले नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि उसका ऑडिट कंप्लीट नहीं हो रहा टाइम पर, जिसकी वजह से मैनेजमेंट क्या कह रही है कि हम उसके अकाउंट्स को सर्टिफाई करके आप प्रोवाइड कर देते हैं, आप उस बेसिस पर हमारा कंसोलिडेटेड लेवल पर ऑडिट कर दो. अब इस केस में बताओ कि आप ऐसे ऑडिट कर दोगे, आपके हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही मानी जाएंगी? देखो, इट डिपेंड्स. उन्होंने जो आपको मैनेजमेंट ने सर्टिफाइड अकाउंट्स दिए हैं, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देना चाहिए बिकॉज ऑफ सम एरर, मिस स्टेटमेंट्स विच आर देयर इन द मैनेजमेंट सर्टिफाइड अकाउंट्स. अगर ऐसा है तो आपको मॉडिफाई कर देना चाहिए, बट यू शुड डेफिनेटली कंसिडर द सर्टिफाइड अकाउंट्स. व्हाई? बिकॉज एटलीस्ट द मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड you with the accounts. They are not saying that no, we are not going to provide you the certified accounts of the joint venture. ऐसा तो वो नहीं कह रहे हैं. So therefore we should definitely consider whether the management the certified accounts provided by the management are reliable or not. ठीक है, उसके बेसिस पर आप एक बारी को कंसिडर कर सकते हो. बट हाँ, अगर आपको वहीं पर भी लगता है कि नो देयर इज अ चांस की गड़बड़ है, तो डेफिनेटली यू शुड क्वालिफाई योर रिपोर्ट. बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप ऑडिट को छोड़ दोगे या फिर नहीं कर पाओगे. तो डेफिनेटली इस केस में यू शुड कंसिडर द सर्टिफाइड अकाउंट्स. अगर आपको लगता है तो क्वालिफाई योर रिपोर्ट. सो दिस शुड बी दी करेक्ट action of the auditor as per me. Let's see which options are given to us. The first option is auditors should accept the management certified accounts of the joint venture, evaluate the implications on the audit report. Qualification will be required for unaudited components as per SS 705, which is प्योरली करेक्ट. नहीं मिली ना आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल, आपने उस सर्टिफाइड अकाउंट्स पर जो मैनेजमेंट सर्टिफाई किया उन अकाउंट्स पर भरोसा किया है तो मॉडिफाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. बट हाँ, इस चीज़ का अपनी क्वालिफिकेशन पर इम्प्लीकेशन को एक बार चेक करो. ये मत कहो कि नहीं हमें क्योंकि वो जॉइंट वेंचर के ऑडिटेड फाइनेंशियल नहीं मिल रहे तो हम ऑडिट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, नो, डिस्क्लेमर नहीं जाएगा. आपको चेक करना पड़ेगा कि डिस्क्लेमर जाने की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं. मतलब सीधा आप ये नहीं कह सकते कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. यू हैव टू चेक कि आपको मॉडिफिकेशन कैसी देनी है डिपेंडिंग अपॉन दी परवेसिवनेस, द मटीरियलिटी ऑफ द थिंग्स. ठीक है, सो दिस ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट टू मी एज ऑफ नाउ. लेट्स रीड दी 3 ऑप्शंस मोर. The auditors cannot accept the management certified accounts of joint venture and should report the matter to ROC. No, ये फ्रॉड का केस नहीं है. वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम फ्रॉड के केस में जनरली जाते हैं. इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी कि हम ROC के पास चले जाएंगे. सिमिलरली मैनेजमेंट कैनॉट वाली बात तो देखो गलत ही है, सीधा. वाई? बिकॉज यू कैन एक्सेप्ट इट, बट हाँ आपको मॉडिफिकेशन देनी है दे दो. बट हाँ, जो वो मना तो नहीं कर रहे ना, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने कि हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे जॉइंट वेंचर का. सीधा फिर तो मॉडिफिकेशन होता है. बिकॉज दे आर सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू दी अकाउंट्स ऑफ द जॉइंट वेंचर. दे आर नॉट सेइंग लाइक दैट. जैसा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था, दैट इज 51 क्वेश्चन नंबर 51 जो था उसके अंदर तो सब्सिडरी प्रोवाइड ही नहीं कर रहे थे. ऑडिटेड फाइनेंशियल तो छोड़ो, फाइनेंशियल ही प्रोवाइड नहीं कर रहे थे. उस केस में तो सीधा मॉडिफिकेशन था. बट यहाँ पर सीधा मॉडिफिकेशन नहीं दे सकते. यू हैव टू चेक द सिनेरियोज, द इम्प्लीकेशन. उसके बाद सो यहाँ पर एक्सेप्ट ना करने वाली बात नहीं है. यू शुड एक्सेप्ट. व्हाई? बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग इट. Now, auditors should accept the management certified accounts of joint venture provided the revenue of the joint venture is less than 10% of the total. नहीं, इसकी बात ही नहीं है कि 10% से कम है, ऐसा तो है नहीं. तो ये वाली लाइन भी बिल्कुल इनकरेक्ट है. ना ही मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट पर आ रहा है, ना ही रिपोर्टेबल सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है. तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही बेकार है. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए इन दिस केस. ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपको ये वाला पार्ट पता चले कि कौन से अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ये चीज़ दी है तो प्लीज़ लेट मी नो. ठीक है,
ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55. हो सकता है हमें कंफ्यूज करने के लिए भी दिया हो, बट आई डोंट नो, मेरे हिसाब से वो गलत लाइन लिखी हुई है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 55. Advik Limited is an unlisted public company. The company acquired few companies in last 3-4 years which have been assessed as its subsidiaries, associates, joint ventures, hereinafter jointly called as components. The company prepares its condensed consolidated financial statements every quarter to review the performance of the group. In the past years, the company used to get the financials of its components reviewed, audited on a quarterly basis. AJ & Company LLP is the statutory auditor of the parent company, and KSH Associates is the statutory auditor of all the components. Quarterly condensed consolidated financial statements of the group are reviewed by the statutory auditors as per the terms of engagement. Now, the AJ & Company LLP has communicated to Advik Limited that in line with the requirements of Companies Act 2013, it would also be required to undertake the audit of a limited review of all the components which would be consolidated with those of Advik Limited, and for which KSH and Associates are the statutory auditors currently. बताओ, क्या ये लोग सही बोल रहे हैं? नहीं. क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आपको पता होगा SA 600 के हिसाब से इट इज़ ऑलवेज रिटर्न कि आपको दूसरे कंपोनेंट्स का जो ऑडिटर है उस पर ट्रस्ट करना चाहिए. वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके काम पर ट्रस्ट करना चाहिए. उसके काम की आपको दोबारा से काम को रिव्यू या रीचेक करने की ज़रूरत नहीं है. जो वो ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा, आप उसके ऊपर रिलाई करके अपनी रिपोर्ट को इशू कर सकते हो, मेंशनिंग द फैक्ट कि ये वाले कंपोनेंट्स को कौन से ऑडिटर्स ने ऑडिट किया है एंड दे हैव नॉट बीन ऑडिटेड बाय यू. ठीक है, तो इस केस में ये गलत चीज़ बोल रहा है एडविक लिमिटेड का ऑडिटर, दैट इज द AJ & Company LLP. ये चीज़ बिल्कुल गलत बोल रहा है कि उसको सारे कंपोनेंट्स को फिर से चेक करना पड़ेगा, उसको रिव्यू करना पड़ेगा. नो, it is not required. Management is not agreeing with the same, as they don't want to change KSH and Associates as the auditors of the components, and the requirement mentioned by AJ & Company LLP will lead to duplication of work by the auditors as well as the management. So please advise in this case, in an audit or review of consolidated financial statements, whether condensed or complete, the principal auditor is required to perform various procedures in accordance with SA 600 using the work of another auditor, and hence the requirement of the auditor is valid. No, the auditor's requirement is not valid. In an audit or review of consolidated financial statements, whether condensed or complete, the principal auditor is required to perform the various procedures in accordance with the requirements of Companies Accounts and Audit Rules 2014, and hence the requirement not valid. पढ़ना नहीं चाहिए था. सबसे पहले नीचे वाले ऑप्शंस देख लेती तो शायद मेरा टाइम सेव हो जाता. तो आपको भी ऐसे करना है. देखो उसमें क्या लिख रखा है, वैलिडिटी. तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन एन ऑडिट रिव्यू ऑफ दी, नॉट करेक्ट लिखा है ना, हेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर इज नॉट करेक्ट. तो ये पढ़ लेते हैं. In an audit or review of consolidated financial statements, whether condensed or complete, the principal auditor is not required to re-perform the audit or limited review of the components, and hence the requirement of the auditor is incorrect. ठीक है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही लग रहा है. फिर भी डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं. मैनेजमेंट एंड ऑडिटर नीड टू डिसाइड दिस म्यूचुअली. नहीं, ये बिल्कुल ही गलत लिख रखा है. So the third option is the correct one. बहुत ही क्लियर क्वेश्चन था. Next question is question number 56. Entity P is audited by a different auditor other than the parent entity Q. The principal auditor, यहाँ पे principal की spelling गलत है, that is the auditor of entity Q decides to use the work of auditor or of the component, that is entity P, in relation to the audit of consolidated financial statements. In doing so, he would comply with the requirements of definitely SA 600. ऊपर भी इसी चीज़ का क्वेश्चन था, तो SA 600 इज द करेक्ट आंसर. SA 299 जॉइंट ऑडिट के ऊपर है, यहाँ पर जॉइंट ऑडिट थोड़ी ना लग रहा है. SA 720 भी नहीं आएगा और SRS भी नहीं आएगा. Let's move on to the next question, which is question number 57. 56 तो काफ़ी easy था. 57 पर आते हैं. You are the internal auditor of FCD Bank Limited for the year 1920, and the bank maintains all the data on the computer. You are instructed by your senior to verify the loan against the fixed deposits of the Navi Mumbai branch. As per the scope of audit, you need to ensure that proper lien has been marked on all the fixed deposits against which loan has been issued. Which of the following procedure you will follow for the same? तो आपको चेक करना है कि प्रॉपर लियन मार्क किया है या नहीं किया है. आपको वेरीफाई करना है कि जो कौन से लोन्स हैं जो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट दिए गए हैं. तो इस केस में आप क्या चेक करोगे कि जो लोन दिया है
फिक्स एसेट्स के, फिक्स डिपॉजिट्स के अगेंस्ट, और फिक्स डिपॉजिट्स जो बैंक है उसके नाम पर इशू हो जाए, उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाए, और उसके जो प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए कि, और उनके पास प्रॉपर लियन मार्क्ड होना चाहिए फिक्स डिपॉजिट्स पर, ठीक है, दिस हैज टू बी डन। लेट्स सी इसमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इज एंश्योर दैट ऑल द फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स आर अटैच्ड अलोंग विद द अप्रूव्ड लोन डॉक्यूमेंट्स। लोन डॉक्यूमेंट्स अटैच होने की वजह से आप कह सकते हो कि वो सही होंगी। हो सकता है ना वो बैंक के नेम पर इशू ही ना हुई हो, तो हो सकता है देयर माइट बी मिस्टेक, तो ये हमें एप्रोप्रिएट अभी तक तो नहीं लग रहा। Ensure that all the fixed deposit receipts against which the loan has been sanctioned are discharged in favor of bank। बिल्कुल ठीक बोला हुआ है, बैंक के फेवर में डिस्चार्ज होंगी तभी माना जाएगा कि उसको लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट्स दिए हैं। एंड चेक दैट लियन इज मार्क्ड इन दी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर पे ही मेंटेन हो रहा है डेटा, तो बिल्कुल सही लग रहा है अभी तक। लेट्स रीड द थर्ड ऑप्शन। डिस्कस द प्रोसेस फॉलोड फॉर लियन मार्किंग विद द ब्रांच मैनेजर। सिर्फ डिस्कस करने से काम हो जाएगा क्या? नहीं, वेरीफाई करना है आपको। Ensure that all the fixed deposit receipts against which the loan has been sanctioned are discharged in favor of the bank, बिल्कुल ठीक। Check that the lien is marked in the computer software, बिल्कुल ठीक। And the fixed deposit should be kept separately with the branch manager। ऐसी थोड़ी ना रिक्वायरमेंट है कि हमें सेपरेटली रखना पड़ेगा तभी माना जाएगा कि वो लोन्स अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट से, नहीं, सेपरेटली रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने साथ में भी रखे हुए होंगे तभी आपको पता चल जाएगा, व्हाई? बिकॉज दे विल बी डिस्चार्ज्ड इन फेवर ऑफ द बैंक, लिखा होगा उसमें स्पेसिफिकली, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो सिर्फ इस लाइन की वजह से ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द 58th क्वेश्चन। PFS Bank was engaged in the business of providing portfolio management services to its customers, ठीक है, PMS प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। नाउ फॉर विच इट टुक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द RBI, बहुत अच्छी बात है। Your firm has been appointed as the statutory auditors of the bank's financial statements for the year ended 31st March 2020. Your senior has instructed you to verify the transactions of portfolio management services। आप क्या हो? आप तो statutory auditor हो, ठीक है। क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स पीएमएस की ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं? नो, एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है। दिस इज द रिक्वायरमेंट, आपने ऑडिट ऑफ बैंक्स चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। While verifying the transactions, you notice that the bank has not prepared the separate record for PMS transactions from the bank's own investments, which is required। ये करने की ज़रूरत होती है। As a statutory auditor, what will be your decision for verification? देखो, उन्होंने ये चीज़ गलत की है कि उन्होंने separately record maintain नहीं करे, बट करने की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये काम मुझे चेक करना था as a statutory auditor? No, this was to be done by the external auditor। Let's see which option is correct। It is not necessary to maintain, no, it is necessary to maintain the separate records, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। As per RBI guidelines, PMS investments need to be audited separately by the external auditors, correct, and the auditors are required to give a certificate separately for the same। So in the above case, the auditor should not verify the PMS transactions and advise the bank to segregate, बिल्कुल ठीक, from its own investments and provide the certificate of the external auditor। एक एक लाइन बिल्कुल ठीक लिख रखी है। Next, the auditor can give the qualified opinion in his audit report on the financial statements of the bank and report the matter to। No, जब उसको देखना ही नहीं था, उसको तो एडवाइस करना था कि आप बाहर वाले भैया एक्सटर्नल ऑडिटर का सर्टिफिकेट लाओ, और एडवाइस करना चाहिए था कि सेग्रीगेट करो इन्वेस्टमेंट्स को। ऑडिटर शुड वेरीफाई द पीएमएस फंड्स आर नॉट यूटिलाइज्ड फॉर लेंडिंग। भैया जब आपको कुछ करना ही नहीं था, आपको तो एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट चाहिए था, उसका सर्टिफिकेट चाहिए था, यहाँ पर तो आपने बिल्कुल ही गलत कर दिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस विल बी बी। एक एक लाइन उसमें सही लिख रखी थी, ठीक है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 58। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 59। योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, your firm has been appointed statutory auditor of a nationalized bank for the year 2019-2020. Your senior advised you to check all the standard assets shown in the balance sheet as on 31st March 2020. While verifying, you observed that one of the accounts was regularized on 28th of March 2020, for which the interest and installment amount was overdue from the quarter ending 30th September 2019. The account was regularized after the repayment of overdue interest and installment amount was done on 26th of March 2020. तो अगर आपको पता होगा आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपने अपना अकाउंट को रेगुलराइज कर लिया है बिफोर द बैलेंस शीट डेट, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। उस केस में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप करा सकते थे, रेगुलराइज करा दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो इस केस में जो ये अमाउंट है बस आपको चेक करना है कि जो जिस मीन्स के थ्रू ये पे किया गया है या जिन सोर्सेज के थ्रू ये पे किया है वेदर दो सोर्सेज आर जेन्युइन और नॉट, वो चीज़ आपको चेक करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 31 मार्च 2020 से पहले क्या करा लिया, रेगुलराइज करा लिया। रेगुलराइज किस दिन कराया, 28 मार्च को, तो बहुत बढ़िया। नाउ ओनली द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल year was reckoned as the date of account becoming NPA by the bank. As a statutory auditor, will you agree with the bank's policy? Yes, we will agree. Now, as the auditor, as the interest charge in the account was overdue for more than 90 days from the end of the quarter, it should be classified as NPA? No. As the overdue interest and installment amount was paid before the balance sheet date, there is no reason to classify as NPA? No. The auditor should not agree with the bank's policy to regularize the account before balance sheet date as overdue interest indicates more than normal risk. No. बैंक कैन रेगुलराइज, क्यों? क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये हम किसके बेसिस पर आंसर दे रहे हैं, आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से। बैंक कैन रेगुलराइज द अकाउंट बिफोर द बैलेंस शीट डेट बट शुड एंश्योर दैट द अमाउंट हैज बीन पेड थ्रू जेन्युइन रिसोर्सेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, and not by sanction of additional facilities, and the account remains in order subsequently. This is very clear कि यही वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपने ऑलरेडी ऑडिट ऑफ बैंक्स चैप्टर के अंदर पढ़े हुए होंगे पॉइंट्स, बहुत इजी एमसीक्यूज हैं मेरे तो, है ना। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एमसीक्यू फॉर टुडे। XYZ Bank had an NPA account of Messrs Glen Park showing recoverable amount of 55 lakhs in the books. It sold the NPA for 56 lakhs. ओके, तो बेचा कितने का, 56 लाख का। NPA बुक्स में कितने का था, 55 का। तो 55 की चीज़ 56 में बेच दी, 1 लाख का आपको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो इस केस में आप क्या करोगे, जब भी आपको लॉस होता है, मतलब अगर आप बुक्स में आपका ज़्यादा पे दिख रहा होता है और आप बेचते कम पर, तो डेफिनेटली इट वुड हैव बीन ट्रांसफर टू पीएल डायरेक्टली। बट अगर आपको गेन हो रहा होता है ना, तो गेन को आप पीएल में ट्रांसफर नहीं करते, आप प्रोविजन अकाउंट में डाल देते हो। किस लिए, जिससे कि जो भी आपके अदर एनपीएज होंगे, जिसमें आपको अदर एनपीएज होंगे बेसिकली, उसके लिए आप उस पर्पस के लिए उसको यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, अदर एनपीएज के लिए। तो यहाँ पर आपको उसको किस में डालने की जरूरत है, प्रोविजन में। पीएल में आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते बिकॉज हेयर इट इज द एक्सेस अमाउंट। तो क्रेडिट द एक्सेस ऑफ 1 लाख टू प्रॉफिट, नो, दिस इज नॉट टू बी ट्रांसफर टू पीएल। Let the amount remain in Glen Park account, no, we cannot leave that in the Glen Park account. नेक्स्ट इज दी क्रेडिट दी एक्सेस ऑफ 1 लाख टू प्रोविजन फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एनपीएस, बिल्कुल सही। जैसे कि जो बाकी के होंगे एनपीएस, उन पर आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे, नेट बैलेंस दिखेगा लास्ट में। ठीक है, नाउ रिटर्न ऑफ 1 लाख टू द पार्टी परचेजिंग दी एनपीए, नो भाई, एक्स्ट्रा अगर हमने एक्स्ट्रा में बेचे हैं तो क्या हम 1 लाख रुपए वापस कर देंगे, भाई नहीं, एक्स्ट्रा मिल गया हमें, आप वापस ले लो, नो, ऑब्वियसली नो। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस विल बी सी। ठीक है, सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, और आपने ये भी ऑडिट ऑफ बैंक्स के अंदर पढ़ा हुआ होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ओके, सो दीज आर ऑल दी MCQs, दीज आर द 10 MCQs that we covered today, 51 to 60. If you enjoyed participating with me, please give this video a big thumbs up, it means a lot to me. Your likes, comments and subscriber जब increase होते हैं, this gives me a lot of motivation to work more. So please consider subscribing the channel in case you are new here, and hit the thumbs up button, which really acts as a motivating factor. So yeah, that's all for today guys. Thank you so much for watching this video. I wish you all the best for your exams, and stay happy, stay safe and keep studying. Bye bye.